Now we will do some questions based on statistics. Question number 1. A random variable x has the following distribution. Probability distribution दे रखा है बेटा एक random variable x का. वो कह रहा है अगर वेरिएबल x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 हो सकती है तो उस वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू डेटा 1, 2, 3, 4, 5 हो सकती है k स्क्वायर 2k, k, 2k and 5k स्क्वायर. तो you have to find the probability that x is greater than 2. The probability x is greater than 2. तो बेटा कैसे करेंगे अपन इस क्वेश्चन को, चलिए हम देखते हैं. तो सबसे पहली चीज देखिए, ये जो डेटा है ये एग्जॉस्टिव है. इसका मतलब जब एग्जॉस्टिव सेट ऑफ डेटा दे रखा होता है तो उनकी जब सबकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज की हम बात करेंगे तो द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1. So first we will be finding the value of k by adding all the probabilities, that is k square plus 2k plus k plus 2k plus 5k square is equals to 1. Here k square 2k k 2k 5k square is equals to 1. Okay. Now you will get a quadratic equation, that is 6k square plus 5k minus 1 is equal to 0. 6k square plus 5k minus 1 is equal to 0. If you factorize it, you get 6k minus 1 into k plus 1 is equal to 0. Now we know that the probability cannot be negative, so we will take the value of k as 1 by 6. Minus 1 will be rejected. Now after that, you need to find the probability that the variable x takes values greater than 2. So इसका मतलब probability of x greater than 2 will be what? 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 के लिए क्या क्या होता है बेटा? k plus 2k plus 5k square. That is 3k plus 5k square. We put the value of k as 1 by 6. So 3 by 6 plus 5 by 36. If you take LCM, 36 will be LCM. 6 6 are 6 3 are 18 plus 5. So the answer will come out to be 23 by 36. I hope it is clear to you. So the correct answer for this question becomes 23 by 36. समझ में आया क्या किया बेटा? पहले एग्जॉस्टिव सेट थे तो हमने इनसे इन सबका सम जो है वो कैलकुलेट कर दिया और वो जो सम है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज वो एग्जॉस्टिव सेट का 1 होना चाहिए. उसके बाद बिकॉज वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2, तो 3, 4, 5 वेरिएबल्स जब होंगे उनका सब जब आप कैलकुलेट करोगे तो दैट सम विल कम आउट टू बी 23 by 36. ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा. व्हाट इज गिवन इन सेकंड क्वेश्चन? इफ वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n natural numbers, variance of first n natural numbers is 10 and the variance of first m even natural numbers is 16. तो सबसे पहले व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस? इट इज सिग्मा xi स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा xi बाय n का होल स्क्वायर. राइट, नाउ फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n natural numbers. तो फर्स्ट n natural numbers मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल n स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 up till n divided by n का होल स्क्वायर. Correct? This is what we have to solve. Now we know the formula of sum of sigma n square, that is n into एक n कट जाएगा बेटा, तो n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 minus this becomes n into n plus 1 upon n by 2 का whole square. This n can cancel. If you want, you can take n plus 1 common and we will be remaining by 2n plus 1 by 6 minus 1 n plus 1 I have taken common. तो यहाँ क्या बचा बेटा? n plus 1 by 2. क्लियर? तो डेटा में ये वेरिएंस जो है हमें 10 के बराबर दे रखा है. ठीक है ना? बस इस 10. Now after simplifying this, you will get the equation as n square minus 1 by 12 is equals to 10. Okay? After simplifying and multiplying, you will get this n square minus 1 by 12 is equals to 10. So n square comes out to be 121 और the value of n comes out to be 11. ठीक है? तो ये पहला जो स्टेप है ये तो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं जिसमें n की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? 11 आ रही. अब सेम वो बोल रहा है वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स. इवन नेचुरल नंबर मतलब 2, 4, 6 अप टिल 2n तक, तो इनका वेरिएंस. अच्छा, मैं आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर
हर डेटा किसी m क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है तो वेरिएंस m स्क्वायर से मल्टीप्लाई लैम्डा से मल्टीप्लाई होता है तो वेरिएंस लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है, स्टैंडर्ड डिवीजन लैम्डा से मल्टीप्लाई होता है। तो इसका अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो हर डेटा 1 2 3 से लेकर m तक आएगा। तो जैसे हमने फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का निकाला था वैसे ही फर्स्ट m नेचुरल नंबर्स का कितना आएगा, m स्क्वायर माइनस 1/12 आएगा। और हर डेटा 2 से मल्टीप्लाई तो वेरिएंस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये डेटा बेटा तो कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, ठीक है। तो m स्क्वायर माइनस 1 4 12 4 का 48, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 7 हमारे पास m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई, इंटीजर टाइप n प्लस m पूछा था, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n प्लस m, द वैल्यू ऑफ n प्लस m बिकम्स 8, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ बेटा आपको कि कैसे हमने सॉल्व किया। डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस स्टेप में हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली कि हर डेटा लैम्डा से मल्टीप्लाई हुआ तो वेरिएंस जो होगा वो भी लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है, स्टैंडर्ड डिवीजन लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। चलिए नाउ वी कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 नंबर्स। 8 नंबर कौन से, 3 7 9 12 13 20 x y, मीन है 10 और वेरिएंस है 25। तो हमें x into y की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 मीन वी नो दैट वी विल कैलकुलेट मीन बाय 3 plus 7 plus 9 plus 12 plus 13 plus 20 plus x plus y। 8 डेटा है टोटल, तो 8 से डिवाइड करूंगा एंड दिस मीन इज गिवन आउट टू बी 10। क्लियर? सो आफ्टर कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, from here you will get the value of x plus y. The value of x plus y will come out to be 60, equation number 1. And now we will apply the formula of variance. So the formula of variance is sigma xi square. Okay, sigma xi square by n minus mean का square. What is mean? Mean question already 10 दे रखा है, तो 10 का square. And this data is given out to be 25. Sigma xi square मतलब 9 plus 7 का square कितना होगा बेटा, 49. फिर 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 20 का स्क्वायर 400 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 125. So after calculating you will get the value of x square plus y square as 148, ठीक है। यहाँ से हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 148। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई। अगर आप इस इक्वेशन का स्क्वायर करो, इस इक्वेशन का स्क्वायर करो, क्योंकि हमें x into y की वैल्यू चाहिए ना बेटा, तो स्क्वायर करने पे यू गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 16 स्क्वायर इज 256। You will substitute the value of x square plus y square as 148 here. So 256 minus 148 x y into 2 is 256 minus 148. Clear? So after calculation when you solve the value of x y, answer में लिख ले हम, answer is the 54. The value of x into y comes out to be 54. Clear है? थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना प्यार हम सब के साथ बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस आर 20 and 2 रिस्पेक्टिवली। 10 ऑब्जर्वेशंस दिए जिनका मीन 20 है और उनका स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है। अगर हर ऑब्जर्वेशन को इज मल्टीप्लाइड बाय p एंड देन इट्स रिड्यूस्ड बाय q, p एंड q नॉन जीरो है, तो the new mean and new standard deviation become half of the original। जो ओरिजिनली मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन तो उसके हाफ हो जाते हैं। ये करने के बाद तो q की क्या वैल्यू होगी? ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, द न्यू मीन सिग्मा xi, कितना डेटा है बेटा? 10। तो सिग्मा xi upon 10 is given to be 20, so sigma xi becomes 200 and the standard deviation becomes जो भी है ये दिया हुआ। Now what it's saying that each observation is multiplied by p, px1,
px2, px3, and so on up till px10. Okay, and then it's reduced by q. So each data becomes like this: px1 minus q, px2 minus q, px3 minus q, and px10 minus q. Okay, so now it's saying that अब इसका अगर हम मीन निकालें तो इसका बेटा मीन कितना होगा? It will be the sum of all the terms. That is, if you take p common, it will be x1 plus x2 up till x10 minus 10 times q divided by 10, and it becomes the half of original. The half of original means it becomes 10. Okay, so sigma xi is given to be 200. So this becomes p into 200 minus 10 times q upon 10 is equals to 10. If you want, we can cancel 10. So 20p minus q is equals to 10. Right? We get a standard equation like this. Now, we will use the properties of standard deviation, that the standard deviation remains unchanged if from each data some quantity is added or subtracted. So if we are subtracting minus q from each data, then the standard deviation doesn't change. But if each data is multiplied by a constant p, then standard deviation also gets multiplied by that constant p. Right? So the new standard deviation of the given data x1, x2, x3 up till x10 will be how much? It will be mod of p, right, into the that one purana wala jo tha. So mod of p into 2 becomes 1. So from here you will get the value of p as plus minus 1 by 2. Okay, standard deviation gets multiplied by p and it becomes the half of original, so it becomes 1. So p becomes plus minus half. If we take p is equals to 1 by 2, if we take p equals to 1 by 2, put it in this equation, you will get q equals to 0. And if you take p is equals to minus 1 by 2, so this becomes minus 10 and q becomes minus 20. So because question has given that q cannot be 0, so this case gets rejected and the value of q comes out to be minus 20. That means option A will be the correct answer. Okay बेटा, सिंपल सा है, ध्यान से कंसेप्ट और प्रॉपर्टीज यूज करिए तो सॉल्व हो जाता है. ओके, चलिए, नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let the observations, there are 10 observations, xi, i1 to 10, that is x1, x2, x3 up till x10, satisfy the equations. Two equations have been given. One is sigma xi minus 5 का जो sum है is 10, and one is sigma i1 to 10 sigma xi minus 5 का whole square equals to 40. If lambda and mu are the mean and variance of x1 minus 3, x2 minus 3, and so on up till xn minus 3, then find the ordered pair mu and lambda. Okay, so what we'll do is we will first calculate the mean. अच्छा, हमें क्या दे रखा है बेटा? What we have been given? We have been given x1 minus 5 plus x2 minus 5 plus x3 minus 5 and so on. उसका सम हमें given था, right? हमें मीन किसका निकालना बेटा? हमें मीन निकालना है x1 minus 3 plus x2 minus 3 and so on up till x10 minus 3. Now see what I am writing and divided by 10. Now I am writing this in this form. What you can do is you can find the value of sigma xi from this, or you can write it as x1 minus 5 plus 2 plus x2 minus 5 plus 2. I hope you are getting it. x10 minus 5 plus 2 divided by 10. Clear है क्या बेटा? अच्छा, sigma xi minus 5, that is x1 minus 5 plus x2 minus 5 up till x10 minus 5. Its value is given out to be 10, plus 2 gets multiplied how many times? 10 times, divided by 10. So this is given to be mu, this is given to be mu, the value of mu comes out to be 3. Okay, we have to find the ordered pair mu comma lambda. We are getting the value of mu as 3. Now we need to find the variance of the data. Variance of the data, x1 minus 3, x2 minus 3 and so on up till x10 minus 3. Again, I'll use the same properties and the standard deviation and variance remains unchanged. Standard deviation and variance remains unchanged if the data is added or subtracted by some quantity. So what will be the variance of xi minus 5 will be the variance of xi minus 3 also. It doesn't change this. So I'll find the variance of this. That is lambda is equals to, what will be the formula? It will be sigma xi minus 5 whole square divided by number of terms minus their mean. प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं
और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर रखे हैं। तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोज़ देख सकते हैं ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें। Now mean we have already calculated. The mean we have calculated is 3 का whole square. Clear? We have already calculated the mean of the data. Clear? So the mean of the data, sorry, xi minus y, the mean of the data, it will come out to be, their sum was 10 upon 10 whole square. Okay, now what is the value of sigma xi minus 5 whole square given? It given out to be 40 by 10 minus 1, which comes out to be 3. So the value of lambda also comes out to be 3. So the ordered pair mu comma lambda comes out to be 3 comma 3. Okay, सिंपल सा है। इसमें क्या यूज किया बेटा मैंने, जो सिग्मा आई माइनस एक्स आई माइनस 5 के डेटा से वेरिएंस कैलकुलेट होगा वही एक्स आई माइनस 3 के डेटा का वेरिएंस होगा। इट डजंट अनचेंज, इट रिमेन्स अनचेंज बिकॉज ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से चेंज नहीं होता। ये प्रॉपर्टी थी उसकी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल सा है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्या गिवन है, लेट्स सी। if standard deviation of -1, 0, 1k, 4 observations का is √5. So what we have to do, we have to apply the formula of standard deviation. The formula of standard deviation is under root of what things we have to calculate. We have to first calculate sigma xi square. Sigma xi square, that will be 1 plus 0 plus 1 plus k square, which is k square plus 2. And also we need to calculate sigma xi, that is -1 plus 0 plus 1 plus k, which is k. Now the formula of standard deviation is sigma xi square, that is k square plus 2, k square plus 2 divided by number of terms minus mean ka square. And this data is given out to be how much? Standard deviation is given out to be √5. ठीक है, k is equals to, आंसर इज नॉट 2, ऑप्शन चेक करना है, वो मैंने गलती से लिख दिया था। सो प्लीज इसको सॉल्व दिस विल बिकम k स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 5 4 आर 20, राइट। मीन, अरे माय मिस्टेक, k बाय 4 का होल स्क्वायर होगा बेटा। मीन क्या होगा, ये तो सम ऑफ द टर्म्स था ना, तो मीन होगा k बाय 4 का होल स्क्वायर। सो after squaring this will become k square plus 2 by 4 minus k square by 16 is equals to 5. If you take LCM, 16 आएगा तो 4k square plus 4 to the 8 minus k square equals to upon में 16 और यहाँ पर 5। ठीक है, so 3k square plus 8 is equals to how much? 16 5 is 80. So 3k square comes out to be 72. So k square comes out to be 24. So k comes out to be √24. √24, that is 6 into 4. 6 into 4 मतलब 2√6. The value of k comes out to be 2√6. K positive है, that's why I have taken only the positive value. So 2√6 is written in option number C. Okay. बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं, वो पसंद आए तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा जो है वो ले सकें। आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है और हम उतने ही मोटिवेशन से आपके बेहतरमंद के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। ओके बच्चा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7th क्वेश्चन। इसमें हमें दिया है द मीन एंड मीडियन ऑफ फॉलोइंग 10 नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो 10 नंबर है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, उनका मीन और मीडियन दिया हुआ है। अच्छा बेटा, जब ऑर्डर मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन निकालने के लिए डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब आते हैं और क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो जो मिडिल टर्म्स होती है उनका एवरेज। तो मिडिल टर्म्स कौन सी होंगी? 1 2 3 4।
5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, तो these two are the middle terms. तो median will be 34 plus x by 2 उनका average, and it's given out to be how much? It is given out to be 35. So 34 plus x is equals to 70. The value of x comes out to be 36. ठीक है, and the mean of these data, mean मतलब sum, 10 plus 22 plus 26 plus 29 plus 34, x आ गया 36, 42, 62, 70 plus y divided by 10. The mean is given how much? The mean is given to be 42. तो बेटा कैलकुलेशन करके जब आप सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आपके पास 84 आ जाएगी। ठीक है ना, आई होप इतना तो कर ही लेंगे ना, सम तो कैलकुलेट करना है, वो आप कर लेंगे। तो बेटा x आ गया, y आ गया, y by x निकालना है, तो y by x that is 84 by 36. 12 से कट जाएगा बेटा, 12 7 जा 12 3 जा, so your final answer will come out to be 7 by 3, that is A option. क्लियर है, सिंपल सा है। मैंने कोशिश किया हर टाइप का एक एक मीन है, मीडियन है, जैसे क्वेश्चंस आते हैं है ना, वो आपको करवाते जाऊं। तो ऑल दीस आर पास्ट ईयर क्वेश्चंस ओनली जो आईटी में पूछे गए थे, बाकी आप जो है खुद प्रैक्टिस कर ही लेंगे है ना, किसी भी बुक से यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। पर जैसे मैंने बताया था, जो थ्योरी मैंने बताई ऑलमोस्ट हमेशा उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, we'll attempt one more question number 8. The sum of deviations of 50 observations, the sum of deviations of 50 observations from 30, मतलब हर ऑब्जर्वेशन का 30 से जो डिविएशन है, मतलब x1 minus 30, x2 minus 30 एंड सो ऑन, और ऐसे कितने ऑब्जर्वेशन है 50, तो x50 minus 30 सबको 30 से डिविएट किया है, हर ऑब्जर्वेशन को 30 से डिविएट किया हुआ है। सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम 30 is 50, इनका जो सम है मतलब x1 minus 30 plus x2 minus 30 and so on up till x50 minus 30, इनका सम कितना दे रखा है बेटा 50 दे रखा है, मतलब सिग्मा xi is equals to 1 to 50 माइनस ये 30 कितनी बार ऐड हुआ बेटा 50 टाइम्स, minus 30 into 50 comes out to be 50. Now what you have to do, you have to find the mean of these observations. So mean का फॉर्मूला क्या होगा, sigma xi upon 50 number of terms. What is value of sigma xi? It is 50 plus 30 into 50 divided by 50. 20 से divide कर दो तो 1 plus 30, that is 31. So the mean of the data comes out to be 31. तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो it is written in option number D. ठीक है बेटा, तो बहुत सिंपल सा है जो है, ये हमने क्वेश्चंस कर लिए इसके, अगर हमने थ्योरी पढ़ी तो क्वेश्चंस टफ नहीं लगेंगे। ओके बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक पहुंचे, तो आप नंबर 18002121 वापस रिपीट करता हूं 18002121 पर कॉल करिए। कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा।